Yeah, welcome back children. Today we are going to revise this lesson number 11. What all is important I'll let you know, and I'll help you in going through the text, how to frame out the questions from the lines. Okay, so let us begin with, on this first page I don't find anything much important except the use of carbon compounds containing hydroxyl group. Whenever this hydroxyl group is there, it is known as alcohol. Okay, now this alcohol, of course, in our food it is necessary. It is present in the cotton used for fabrics. Okay, and then it is used for making paper which can be used for notebooks, books, newspapers, currency notes and all. Okay, so from here you can just pick up this use. So for utility purpose, maybe this page is important, otherwise I don't find any importance in this. Let us go to other page. Now here what you have to check is, look, this is monohydric because one OH is present, then dihydric 2 OH are present, and trihydric because 3 OH are present, OH groups are present. Okay, this is normal ethanol, one of the best examples of alcohol. Then this is glycol, common name, and this is glycerol. Okay, from here just have a look, understand these common names, and then come up to this one, primary, secondary and tertiary. From here pick up, because you need to distinguish also. One of the important questions from this chapter is how to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. So in previous chapter also, if you remember, in my previous lecture I told you about Lucas test. So that is used to distinguish between this 1 degree, 2 degree and 3 degree. So you should know what actually these are. Then comes this allylic form. The carbon to what OH group is present is sp3 hybridized, but the neighboring one is sp2. So I told you this is known as allylic form, no? Likewise, so you can go through this also. Now let us come to the third page, and now here we are having allylic and benzyl. Allylic I told you, this one is benzylic. Okay, and if OH would have been directly on benzene ring, then it would have been arylic. Fine. So this one is benzylic, you can see from here. Then of course we are going to have this ether also along with alcohol. So symmetric and unsymmetric ether. Ether is when one carbon chain gets disrupted by oxygen. In between one oxygen is there, the continuity is disrupted. So these are known as, when O is sandwiched in between, is known as ether. Alkoxyalkane, this is the nomenclature given. Now before going in detail with this chapter, what all is important in this, before that I would like to let you know the pattern of questions that are asked in this board examination. Okay, so that pattern I am telling you, prepare according to the questions, what pattern they ask, what questions they put up, prepare according to that, rather than just blindly going through the chapter. No, that way you won't earn anything. So I'll let you know the question pattern, what are important. Okay, look, the type of questions that can be framed out from this chapter. The foremost thing, of course, they can ask you the IUPAC nomenclature. Okay, now this nomenclature, when they are asking, they are giving the structure to you and they are asking the name to you, or it can be other way around also, means name to structure. That way also it can be. So be prepared for this. And of course OH is very important group. It gets the importance over ethereal group. Then arylic forms, the phenyl and all groups are there. Over that it gets the privilege. It gets privilege over double and triple bond also. So that you have already studied in your previous class, 11th class, but still revise that for the nomenclature. Okay, second thing that you need to prepare is distinguishing test. Now this should be prepared distinguish between this question number 2 should also be prepared just like question number 1 from each and every chapter from this organic portion of volume 2. IUPAC nomenclature they can ask from anywhere, lesson 10, 11, 12, 13, same way distinguish also. In previous chapter also, in I told you, in previous video I have told you, how to distinguish between chloro, bromo and iodo compounds. Same way here also, distinguish between type of questions can be framed out. And now when these type of questions are framed out, then the basic
questions what they ask. First, they may ask you to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. For this, I told you earlier, you have to go for Lucas test. Victor-Mayer test is another option that I have given in the notes also, so you can go through that. But this is the basic one, Lucas test, na, since you have studied in lesson number 10 also, so you can easily give. Out of primary, secondary and tertiary, tertiary is more reactive towards Lucas reagent. So Lucas reagent that helps in giving the turbidity, tertiary gives the turbidity, forms the turbidity immediately. Like that way you can distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. Another way of asking is they may ask you to distinguish between alcohol and phenol. So alcohol, you can check out what kind of alcohol is there. Either you provide a proper authentic test for that particular alcohol, if it is primary, secondary, tertiary, whatever way, but you can give one test for that. Or if you want to provide a chemical test, positive chemical test for phenol, then phenol shows positive test with neutral FeCl3. So this also you can learn. Apart from this, what else is there? You can make use of iodoform test also. Iodoform test where, now you must be thinking methyl ketone is not there, but if there is a possibility of having methyl ketone somewhere, like if I happen to ask you to distinguish between propan-2-ol and propan-3-ol. Now no other test can be there for distinguish between these two other than iodoform test. Now what you will do is oxidize both, and you are going to use a mild oxidizing agent. You can use PCC, pyridinium chlorochromate, or PDC. Both of these are mild oxidizing agent, means they oxidize stepwise. Alcoholic group gets converted to ketonic here, so this will get lifted up to this form, isn't it? OH gets converted to double bond O, carbonyl group, and now on one terminal you can see methyl ketone. Wherever there is a methyl ketone, this type of structure is there, methyl ketone is there, that will definitely show positive test with iodoform. Okay, so it will form iodoform. So iodoform test will be shown by this one, and the other one will not show any, it will not undergo any reaction. So that way you can keep this on hold also, no? So remember, one Lucas test to distinguish, one test with FeCl3, neutral FeCl3 gives violet coloration, and if violet coloration, remember not PPT, coloration is there. Okay, generally children, they are having a habit of writing PPT everywhere. It is not a precipitate, here we get the coloration. Okay, and one iodoform test. Keep these three at your disposal. Then apart from this, what else can be important? Next, third type of question, what can be framed out. Now this third one can be the mechanism. Yeah, children, this mechanism CBSE is interested in. Basically, I won't say only 5, but basically these 5 mechanisms, they can ask either of these, though only there are limited ones as from the point of view of CBSE. 5 are there. Okay, out of those 5 important mechanisms, 3 you will be getting in this chapter only. Okay, but all 3 I'll name that also, and in between I'll let you know when we'll scroll off the pages. I'll let you know in between what all mechanisms are important, what you need to really go through, and if you find them, if you study them very properly, so you'll see 3 steps are there. The first step will be always protonation, that is coming from the catalyst. Okay, and the last, since you added the catalyst in the first one, then third step will be deprotonation. So 2 steps are set. First is protonation, the third is deprotonation. Middle one, as per your requirement, you can deal with. Okay, the mechanism, what all are important are acid catalyzed hydration. Now this hydration is taking place, addition of water on alkenes in presence of acid. Okay, so acid catalyzed hydration on alkenes. Of course, this is one of the most important method of preparing alcohol. So from here you can see. Second is catalytic dehydration. Now this is something reversible to that prior one.
In the first method you are adding water, now you are removing water, catalytic dehydration of alcohols. One this mechanism, okay. And the third one will be, I'll write here because this is overlapped, formation of ether. So formation of ethers take place at a appropriate temperature only. So of course the temperature plays an important role. So these three mechanisms keep at your disposal, should be on your fingertips. The fourth type of question that can be framed out from this chapter is, they can ask you relevant equations for any named reaction. Very important named reactions we are having here, and these can be asked. Now the main most popular ones or frequently asked ones, I'll better say, are, the first one is hydroboration oxidation method. Now this is once again a method to prepare alcohol, isn't it? Hydroboration oxidation. In this, since you are using hydrogen peroxide, so this goes, this satisfies, this works according to anti-Markovnikov rule. The product derived is as per the guidelines of anti-Markovnikov rule. Okay, so hydroboration oxidation method is one. Then comes Kolb's reaction. This is the chemical property of phenol. Okay, and then comes Dow's process. How to get phenol? Very important conditions are necessary. In previous chapter also you must have gone through, isn't it? So this is also there. And then one more very important is coming, and this is Riemer-Tiemer reaction. Again the property of phenols. Okay, so this also you can go through. And last but not the least is Williamson's synthesis, and this method is for preparing ether. Go through all these are given in my notes also, here in the book also, so you can go through, okay, but should be at your fingertips surely. Okay, then comes one more type of question, and this is the reasoning one. They can ask you to account, they can ask why. Okay, and for this reasoning questions, they will pick up any line from the text. In text lines are there given. So when I'll scroll off, I'll let you know where all the lines are there, from where any sort of question, this reasoning type of question can be framed out. Okay, so I'll let you know that. And besides that, you must also be going through the book, so please underline wherever you find something, because it happens so, or something, this kind of line is given, no, immediately underline that and put a Q there. Why? Because the questions can be framed out from there. Revising, please revise that, don't forget that, है ना? So reasoning questions I'll let you know in between when I'll scroll with the chapter. The sixth one now, they may ask you to put up in the order of increasing property, increasing order of any property. Increasing what? Any sort of property. Property means they may ask you the acidic character, they may ask you the boiling points, melting points, anything, solubility they may ask, isn't it? So that way, any on the basis of any property, they may ask you to put up in the proper order. Okay, the seventh type of question that can be framed out is comparison. Comparison of acidic nature. Not only putting up in the order, now they may ask you to compare also. Now what all are here? One is alcohol, isn't it? Then phenol, then ether. Of course, ether they are not going to compare with this. Okay, they may ask you to compare alcohol with water, then alcohol water with phenol also. The phenol is the most acidic, then water is more acidic than alcohol, and this type of order you have to tell. And whenever you have to compare, you have to go for the conjugate base. Okay, if these are acidic, supposed to be acidic, then you have to go for the conjugate base and check out the stability of the conjugate base formed. Now the conjugate base formed from the phenol, that is the phenoxide ion, is the most stable one, which ensures the more acidic character of phenol. Why is it more stable? On the basis of resonance stabilization. Okay, and when with the help of any reaction you need to tell that phenol is the most acidic, then what you can do is alcohol shows a reaction with sodium metal, hydrogen is displaced. Okay,
Phenol may show reaction with Na also and NaOH as well. But phenol fails to show the reaction with sodium bicarbonate and sodium carbonate. So sodium bicarbonate and sodium bicarbonate, these the reactions with these two, these are shown by carboxylic acid. So carboxylic acid in general, COH, I'm talking about that group, what will be included in the next chapter. This carboxyl group reacts with sodium, sodium hydroxide, sodium bicarbonate, and even sodium carbonate. Since that reacts with all four, that's why it is the most acidic among these. Okay, and phenol reacts with only two of those four, then this is little bit less. Sodium reacts only with sodium, alcohol reacts with only with sodium, so this is the weakest acid, so you can show the reactions also. Fine. Then comes one more type of question is there, that is convert, the conversion. For going with this conversion type of convert so and so through something other. Okay, so for this conversion, try your level best to include only two steps, go for only two steps. Okay, and as it is more of essential, if it is not given over there, so may see, but still try your level best to have only two steps. Okay, and for this you need to go through or you should be well versed with all sorts of reagents. In case you know the reagents and their use, you can easily go for this conversion. Okay, so reagent list you need to prepare here. Whenever you go through the lines or go through the pages, immediately if you come across any sort of reagent, note down and write the use also, where this reagent is used. For example, I told you just now, PCC, PDC, these two are used as mild oxidizing agents. Okay, same with CrO3, what is the use of this you should know. So reagents are there, all these reagents, what all they perform work, that way you should know. Iodoform test if you have to go for, then how can you go for that iodoform testable, isn't it? So that way you need to prepare. And conversions, like if you want to weaken the carbon and oxygen bond, in my previous lecture also I told you zinc dust or zinc compound is used, isn't it? So zinc dust will be using to remove OH group. So that way you can prepare an entire list, and if in case you can't prepare, then keep waiting. Once I get over with all the 4 chapters, 10, 11, 12, 13 chapters, the revision of these 4, then a summarized form I'll give you, and in that I'll try to put up the list of the reagents also and their mechanism or the function what they undergo. Okay, for the time being, since we are concentrating on this chapter only, so let us quickly go through this chapter so that we may know the reasoning type of questions can be framed down from where. Okay, chaliye now नीचे आते हैं nomenclature. Since this has come, to I'll tell you a few questions what were put up. Like one was in 2017, the nomenclature, you had to write the name of this compound, CH3 double bond C, then Br and CH2OH. You can easily see, you can write the name to bromo and then 3-methyl, simple ones only, not much complicated one. But 2-ene and then 1 all. Okay, here we are numbering from. Okay, the second one, this was in, once again, in 2017 only, it was in another set. Okay, and this is, then one benzene is given. Of course, 1, 2, 3, once again you are going to name from here only, then the name comes out 3-phenyl prop 2-ene 1 all. Okay, then one was from 2011, and this was, write the name of this compound, CH3, and then here OH was given. Okay, so phenol will be the basic one, and we will write 2,6-dimethyl phenol. This was the name. Okay, chaliye, then come to another page. Now here what is there given? Nothing important. Here this phenol, also known as carbolic acid. The other name is carbolic acid. So remember this also. Okay, chaliye, then keep scrolling.
We don't have anything important here. You can go through, but I'm telling you, okay, if I don't find anything what can be put up, then come up to this one, structure. Yes, tick here. Very important. One question can be framed out from here. Okay. Now check out here. See, all these structures are bent, isn't it? Tetrahedral type only. Why? Because two positions are occupied by two lone pairs and two bond pairs are there. Since two lone pair and two bond pair are there, that's why tetrahedral geometry is there, and the bond angle prescribed for CH4, what is tetrahedral, is 109 degree 28 minutes, isn't it? Compare from that. When you talk about alcohol, it is lesser than this. When you talk about ether, it is more. Even for phenol, it is more. Question can be framed out here this only. Ki in spite of the fact that tetrahedral geometry has bond angle so and so, why the bond angle of ether is more, why the bond angle of alcohol is less. So whenever the bond angle is less, means what? Lone pair repulsions are greater than bond pair. That's why ultimately shrinking. When it is expanding, no, why? Because bond pair repulsions are greater than lone pair, because big groups are coming, these groups, they are offering more repulsions. So simple, this type of question can be put up, isn't it? And I'll tell you, once it was given, the question that was framed out was bond angle. I'm using the abbreviation, so please bear with that. Bond angle in ether is slightly more than tetrahedral angle, and it was y. You need to give the answer. Okay, now scroll it and I'll let you know where the answer is given and what is important to study. Read out from here. The question can be framed out from here. Then comes these lower lines are also there, put up here. One question can be framed out from here. Look here, given no bond angle is slightly greater in case of ether, and here you will study the bond angle is slightly less. So one question from here and one question from here can be framed out. Fine. चलिए, अब आ रही है बात mechanism की. I told you 3 mechanism will be from given from here only. No, one mechanism is here. This. Okay, this is the acid catalyzed hydration, or the question that was given was important in both. In 2019 it was, how will you synthesize following alcohol from appropriate alkene. This way also the question can come, or it can be write the mechanism for catalytic hydration of alkene. Both ways it was given in board, so please be prepared with that for this. Okay, and in this one, following alcohol, if they are asking specific alcohols, like it can be let us suppose if I write this and this, okay, or we may have this way also. Tertiary, secondary, isn't it? So how to get these alcohol? So either of these alcohol, how to prepare, you can see. For that you can convert, of course you can convert this to, instead of bond line diagram, proper carbon chain also you can write. And then since wherever OH is given, no, neighboring H, remove that, put double bond here, and then check out if this way it is possible. Okay, so just go on back foot, remove this and form the alkene. Okay, so from here you can prepare, and these two very important questions were there. So one mechanism I told you,
मैंने कहा था कि 3 है, 3 में से एक आ चुका है और ये मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ें। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, बट आई टोल्ड यू बिकॉज आई एम हैविंग वेरी लेस टाइम, ये वीडियोस मेरे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। प्रोटोनेशन है फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है डी प्रोटोनेशन, आई टोल्ड यू। एंड मिडिल में जो भी आपको करना है, जो भी वॉट एवर इज रिक्वायर्ड या जो भी डिमांड है आपका, वो हम बीच में कर सकते हैं। बट फर्स्ट एंड थर्ड मोर ऑफ सेम है, तो मैकेनिज्म को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड है जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, और मैंने आपको ये बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन की फॉर्म में पूछे जाने के लिए। तो इसका कन्वर्जन में भी कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। जब भी कभी आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलाना हो तो प्लीज़ इसके साथ चलें। ओके, देन इधर में दिस इज़ गिविंग यू अ चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स का चॉइस दे रहा है। हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम भी हो सकता था, इवन NaBH4। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स का आपको चॉइस दे रहा है। एंड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। ये सब पे एप्लीकेबल होता है। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं ना, तो प्लीज़ गलती से भी NaBH4 का इस्तेमाल नहीं करें। इस पर सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2H6 ही काम आता है। सो रिमेंबर, इसको रिड्यूस आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सिर्फ इसी से कर सकते हैं, आप NaBH4 से इसको नहीं कर सकते हैं। ओके, देन कम्स, इसको स्क्रॉल कर लें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला एक रिएक्शन आ रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से देखें, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देखें क्योंकि ये कन्वर्जन में काम आ सकता है। और जब भी कभी बोर्ड में कन्वर्जन्स आते हैं ना, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस्तेमाल करके देखें, हो सकता है कोई ना कोई एप्लीकेबल हो, इसलिए। ओके, कम अप हियर, दिस इज डाउस प्रोसेस। ये नेम रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था। इसकी कंडीशन याद करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशंस पे है। अगर आप इजी कंडीशंस पे करना चाहते हो, 4 से 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रख के काम करना चाहते हो, कम टेम्परेचर पे करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट कराने के लिए इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालने पड़ेंगे। ये कंटेंट हमारा प्रीवियस चैप्टर में था, मेरे नोट्स में भी है, तो प्लीज़ उसको बढ़िया से पढ़ लें। ये क्यूमीन से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है कि सजेस्ट अ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन इन लार्ज अमाउंट। इसमें यील्ड बहुत अच्छा होता है, ये ध्यान रखिएगा। लार्ज अमाउंट्स में ये रहा, देखो यहाँ भी ऑब्टेन्ड इन लार्जर क्वांटिटीज़। अगर आपको ऐसे करना हो ना, जब भी कभी यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन जो है वो सिर्फ ऐसे दिया था कि लार्जर अमाउंट में चाहिए, एंड चिल्ड्रन दे गॉट कंफ्यूज्ड। हाँ, किसी को क्लिक अगर क्यूमीन से किया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ध्यान रखिएगा जो बेस्ट यील्ड देने वाला जो है वो यही क्यूमीन से प्रिपरेशन है। तो इसको प्लीज़ ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। और फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। यस, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे यहाँ पे आई हैं, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसके ऊपर ट्रेंड पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्रेंड का बनता है, ठीक है। जब आप अल्कोहल्स की बात करते हैं ना, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथर्स से ज़्यादा है, और ईथर्स का हाइड्रोकार्बन्स नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स से ज़्यादा आएगा, ठीक है। जब हम लास्ट चैप्टर कर रहे होंगे तो मैं उसमें आपको सारे चैप्टर्स का जिस्ट एक साथ लेकर के, सारे फंक्शनल ग्रुप्स को एक साथ लेकर के बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर भी बता दूंगी, जिससे कि कभी कोई भी टाइप का कंपैरिजन आए सो यू कैन ईजिली डू। वो हालांकि मेरे नोट्स में भी है और मैंने रेगुलर क्लासेस में भी बताया है, लेकिन फिर भी एक बार और, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं फाइनली, तो टचअप की फॉर्म में लास्ट में मैं आपको बता दूँगी। चलिए ये ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो इनके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं। वो है, जैसे एक क्वेश्चन था बॉइलिंग पॉइंट, ये शॉर्ट फॉर्म में फिर से देख लेना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज़ लेसर देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। या तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है, या ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज़ स्टीम वोलेटाइल, मतलब वो स्टीम से ही इवेपोरेट हो जाएगा, बट पैरा इज़ नॉट। मतलब कुल मिला के हम लो बॉइलिंग नेचर बता रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। क्यों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का कम है? क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि पैरा में इंटरमोलिकुलर है। इंटरमोलिकुलर का मतलब हुआ, अगर आप एक फिनॉल ले रहे हैं और दूसरा एक और फिनॉल
और इसमें भी NO2, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। तो ये जो है आपको अगर दोनों यूनिट्स को इवेपोरेट करना है तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, और ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ऑर्थो में भी बनता है, ऑर्थो में आपको बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, उस यूनिट को विद द हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली आप उड़ा दें, क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, इसको तो सिर्फ इसी को इवेपोरेट करना है। यू नीड नॉट ब्रेक दैट हाइड्रोजन बॉन्ड। तभी कहा कि एक में इंट्रामोलिकुलर है, एक में इंटरमोलिकुलर है, तो दैट यू कैन गिव द रीज़न। ओके, तो ये कंपैरिजन एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक अच्छा सा, 11th में भी कई दफ़ा दे दिया जाता है, तो इसको पढ़ लें, है ना। नेक्स्ट आ जाएँ आप सॉल्युबिलिटी पे। वंस अगेन इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये जो है ये सारे सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, वाई बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन के आता है, तो इसको भी लाइंस को पढ़ लें। ओके, चलिए अब आते हैं हम इस पे, केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह से भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह से भी अल्कोहल बिहेव कर सकता है। अब ये देखिए, मेटल्स के साथ ही रिएक्शन है, NaOH के साथ नहीं रिएक्ट करता, ये NaHCO3 के साथ नहीं ये रिएक्ट करता, और Na2CO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से आप ये वाला रिएक्शन, एक ये वाला उठाएं कंटेंट, ये वाला ले लें, है ना। ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ना, ये कॉन्जुगेट बेस जो आपका अल्कोहल से बना है, अल्कोहल का हम एसिडिक नेचर बताने जा रहे हैं, है ना। जब भी कभी एसिडिक नेचर बताना हो, उसका मैंने आपको कहा था पहले भी, ये कॉन्जुगेट बेस बनाए, और फिर ये बताएंगे कि ये जो एल्कोक्साइड आयन बना है, ये कहलाता है एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन जो बना है, ये इतना खतरनाक होता है, मतलब इतना रिएक्टिव है कि ये वाटर से भी अगर रिएक्ट करवाओगे ना, तो ये इसका प्रोटॉन ले लेगा और ROH में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में वाटर जो है वो खुद हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ये शो करता है कि H आयन देने की प्रोबेबिलिटी एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा वाटर में है, तो वाटर इज़ बेटर एसिड, है ना। फिर ये एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स दिया हुआ है, पूरा कंटेंट इसको पढ़ लें बढ़िया से, इसको गो थ्रू दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के एसिडिक कैरेक्टर का भी बता रहा है। बेटा लोगों, जब भी एसिडिक कैरेक्टर को बताना हो ना, आपको एसिडिक कैरेक्टर या स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीजेस विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ेगा, रिलीजिंग ग्रुप होगा तो हमेशा घटेगा, तभी ये ऑर्डर है। यहाँ पे R ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या डोनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए जितने ज़्यादा R बढ़ते जाएंगे उतनी ही डेंसिटी कार्बन पे बढ़ती जाएगी। अब कार्बन भी नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव है, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, H आयन नहीं निकलेगा, इजंट इट। तो इसीलिए जब भी कभी आपको एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना हो, यू नीड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब जो ये पूरा पेज जो आ रहा है, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन। ये एसिडिटी का पूरा फंडामेंटल बताएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि ये बताएंगे फिनॉल की ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है या फिनॉक्साइड आयन का ज़्यादा है। ओके, तो ये पेज जो है आपका 336, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो पूरे को आप पढ़ जाएँ, बढ़िया से घोट के पी जाएँ, जितना बढ़िया तरीके से आप पी सकते हैं। ओके, हालांकि इस एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर एक मैंने नोट्स में भी बहुत अच्छा सा डिटेल दिया हुआ है ना वर्जन। अब जैसे एक बताती हूँ मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, पर मैं यहीं लिख देती हूँ, मार्जिन के ऊपर में मेरे पास थोड़ी सी जगह मुझे नज़र आ रही है, इसीलिए। ओके, अब इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब किस किस को अरेंज करना था, ये है आपका 2013 का क्वेश्चन है। ओके, किस किस को अरेंज करना था, वो था 4 नाइट्रोफिनॉल, एक फिनॉल था, और एक था आपके पास में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और एक आपको दिया हुआ था 4 मिथाइल फिनॉल। इनको कंपेयर करना था, सीधा सीधा दिख रहा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। एंड ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको 2017 में भी दिया हुआ था, और वो था सेम, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शंस यहाँ पे लिख रही हूँ। वो है पैराक्रिसॉल,
एक था आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, अब ये जो क्रिसॉल दे दिया जाता है ना, तो ये नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्रिसॉल किसको कहते हैं। क्रिसॉल मिथाइल ग्रुप आ जाए, यहाँ पे था क्रिसॉल कर सकते थे लेकिन नहीं किया, कोई बात नहीं, अब दे दिया क्रिसॉल, तो क्रिसॉल का भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, हाँ जी, तो क्रिसॉल का भी देख लें, है ना। और इसके बाद में, हाँ बेटा, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल भी आ गया यहाँ पे, और साथ में एक तीसरा है फिनॉल, इनमें से अरेंज करना है। फिर से आप वही मेथड यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, ये रहा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप एनहांसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। सो गो थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनॉक्साइड आयन के बनाएं। और इंटेक्स जो क्वेश्चन है ना, एक देखो ये वाला यहीं से उठा करके, बेटा मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहीं पे से इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि बोर्ड में यहीं से आते हैं। आप जितनी बुक्स रेफ़र करेंगे आप कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बेटर पिकअप फ्रॉम हियर ओनली। आप इस इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से कर जाएं, तो उसके बाद में कुछ बचता ही नहीं है फिर। ओके, चलिए, देन कम्स आपका नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हाँ जी, इधर में इसी से रेलिवेंट में कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख लेती हूँ। एक तो 2012 का एक क्वेश्चन है, ये है आउट ऑफ द 2 अल्कोहल्स, कौन कौन सी 2 अल्कोहल्स हैं। एक तो दिया हुआ है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, एंड इट इज़ कंपेयर्ड विद CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH। आउट ऑफ these two, which one will react more easily with concentrated HCl in presence of anhydrous ZnCl2। ये एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये आपका प्रीवियस चैप्टर का कंटेंट है। ये ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है, और इसका मतलब ये है कि ल्यूकास टेस्ट आपसे पूछ रहे हैं। रिएक्टिव वो होगा जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा आपका स्टेबल होगा। ये एलाइलिक फॉर्म है, तो दिस वन ऑफ कोर्स होल्ड्स मोर स्टेबिलिटी। एलाइलिक कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए रिएक्टिव भी वही ज़्यादा होगा। ओके, इसी के साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग एक और क्वेश्चन है, वो है कि इन above among HCl, HBr and HI। अब ये चेंज कर दिए, है ना। तो अब आपसे हेलोजन एसिड चेंज करके पूछा जा रहा है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव के लिए क्या करेंगे, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी बताया था। मोर रिएक्टिव के लिए यू विल गो फॉर, क्या देखेंगे, बेटर लिविंग ग्रुप। और बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, आई, तो कौन सा रिएक्टिव हुआ, HI। ओके, ये देखेंगे। और इसमें एंड वाई भी था, तो ये और देख लें, बोर्ड में ही आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। ओके, साथ में इसके साथ में आप, मैं तो अभी इसको बहुत तेज़ी से स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको जब देखना है तो आप इसको बहुत स्लोली देख लें। एक ये ऑर्डर, इस पर क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। टर्शरी ऑफ कोर्स यू नो, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है उसका। अच्छा, सेकेंड मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लेना। एंड इसका जो हेडिंग आ जाएगा आपका वो है कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ना, तो ये वही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। देन इसके बाद में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के लिए देखिए अब रिएजेंट्स प्रोवाइड होंगे। ये रहा, मैंने आपको कहा था CrO3 का यूज़, PCC का यूज़, PDC एक और ऑल्टरनेटिव आ जाएगा ना, तो दिस कैन बी डन बाय PDC ऑल्सो। तो ये रिएजेंट्स आपको पता होंगे, तो कन्वर्जन में आप बड़े आसानी से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद में व्हाट इज़ लेफ्ट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत कुछ है। ये वाला रिएक्शन बहुत अच्छे से देख के जाइएगा ना, कॉपर के साथ में ये कन्वर्ट करने के फॉर्म में आता है, आपको कई बारी
जब प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स होता है ना, तब इस तरह का रिएक्शन दिया जाता है, तो इसको प्लीज़ ढंग से देखें। कॉपर जो है वो ट्रूली स्पीकिंग ऑक्सीडेशन नहीं करा रहा है, कॉपर अंडरगोज डीहाइड्रोजिनेशन, 2 हाइड्रोजन का रिमूवल करवा रहा है, 2 H हट जाएंगे यहाँ से, 2 H, अगर 1 H यहाँ से 1 H यहाँ से हटेगा तो CHO बच गया सिर्फ, तो डीहाइड्रोजनेशन। और क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है टर्शरी के पास, इसीलिए टर्शरी में आपको कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप नहीं मिलता है, वहाँ एल्कीन बन जाता है। एंड द रीज़न इज लैक्स, ये व्हाट हैपेंस व्हेन में भी आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो वो सोचते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में बच्चा कर रहा है तो टर्शरी दे देते हैं कि टर्शरी में कॉपर एट 573 केल्विन क्या होना चाहिए, तो चिल्ड्रन दे आर हैबिचुअल ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, वो नहीं देखें प्लीज़, एल्कीन बनेगा, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखें। या तो व्हाट हैपेंस व्हेन या वाई की फॉर्म में आ सकता है कि बाकी दो तो रेस्ट 2 आर नॉट फॉर्मिंग एल्कीन बट द थर्ड वन इज फॉर्मिंग एल्कीन, वाई इज इट सो, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो डिहाइड्रोजनेशन कहाँ से करेगा। ओके, तो ये लाइन्स यहाँ पर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे CrO3 के बारे में बात की ना मैंने, तो अभी एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको कि एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो था सजेस्ट अ रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग, अब देखिए ये OH लिखा हुआ है यहाँ पे, एक तरफ कहीं डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ओके, एंड ऐसा ही यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला दिया हुआ है और इसमें OH की जगह पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इन दोनों में से पूछा गया है कि ये जो फर्स्ट वाला है इसको अगर मैं सेकंड वाले में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो हमने देखा डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ा, कार्बन पे कोई असर नहीं पड़ा, OH ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड O में कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। और दिस कैन बी डन, सजेस्ट रिएजेंट, रिएजेंट बताना है तो आप इसमें रिएजेंट CrO3 बता सकते हैं। वाई? बिकॉज CrO3 डबल बॉन्ड पे कोई काम नहीं करता है, OH को ऑक्सीडाइज कर दिया है सिर्फ, ओके। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था तो वो भी आप देख सकते हो। एक और आया हुआ है वो भी मैं लिख देती हूँ, एक क्वेश्चन और है 2017 का है ये, वो है राइट स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ कंपाउंड्स obtained when butane-2-ol reacts with, पहला ऑप्शन दिया हुआ है CrO3, ब्यूटान-2-ऑल अगर CrO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, अभी बताया था कीटोनिक ग्रुप बनता है ना। और सेकेंड इन्होंने दिया हुआ था रिएक्ट्स विद SOCl2, SOCl2 के साथ क्या होगा, OH हट के Cl आ जाएगा, है ना, तो यहाँ 2-क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा SOCl2 के साथ। तो ये दोनों रिएजेंट्स का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, जो चीज़ देखो पूछी भी गई है, डायरेक्ट पूछ लिया उन्होंने, ओके। चलिए, तो बेटा ये आज पेज हुआ है हमारा 340 तक का पेज का तो मैंने अभी बता दिया है, तो इतना आप पढ़ें, ओके। एंड सून आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको एक और वीडियो पोस्ट कर दूँगी क्योंकि इसी में काफ़ी टाइम लग गया, अभी तो ईथर भी बाकी हैं, फिनॉल्स भी बाकी हैं, उनके लिए मैं और एक वीडियो बना करके आपको डाल दूँगी, एंड कम से कम इसको पढ़ते रहें एंड वेट, ओके। थोड़ा सा वेट करें, मैं हो सकता है कल में डाल दूँ, तो मुझे टाइम चाहिए क्योंकि ये खुद ही अपना काफ़ी एक्सीड हो गया है, 1 आवर से ज़्यादा आप लोगों की पढ़ने की क्षमता नहीं होगी। तो अभी जितना बताया है एटलीस्ट इतना प्रिपेयर करें, एंड मेरे नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आगे का भी बता देती हूँ, तो हमारा ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा, ओके। चलिए, इसी के साथ में मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, पढ़ते रहें और कुछ भी दिक्कत आती है तो पूछते हैं।